Hi everyone. So we are here live on this channel to answer a few questions that many students have asked us. So a lot of students have asked us about how do we go about the exams now, how do we go about the prep now after the INICET results. First of all, I want to take this opportunity to congratulate all the high achievers, and I want to tell the students who have not done up to their expectations that it is just an exam and anybody can improve in this exam. Every time you give another exam, you can improve. So don't look at the exam at as a life and death kind of a situation. It is a number. Ranks are a number which can be changed subsequently. So with that in mind, with that kind of mindset in mind, we'll look at the strategy for the November INICET exam and for the subsequent NEETPG exam. And we'll try our best to give you the timelines that you should be doing, the resources that you should be doing, and any question that you have, you can please feel free to ask in the chat box. We will answer your queries as well. Okay, but before we go on to the core strategy, there is a doubt which is creeping in with a lot of students, and that is, that this time the paper was a little atypical. So, I've got certain messages saying, ma'am, is there any point in preparing if it is going to be this atypical? So, let me tell you one thing, that the paper definitely had some atypical questions, but a lot of it, since we've been talking to so many toppers and rank holders, a lot was actually doable, and that is why still people have reached significant number of correct questions, which means no matter how atypical you think the paper can be, believe me, with the right content, with the right base, you can reach out to most of the questions by ruling out options. So which means the content depth, the concept depth is what you need, right? Yes, there will be a few questions always. It is a competitive exam where you may not have idea about any of the 4 choices. And believe me, they don't make a difference in your rank. I've talked to rank 2 also, I've talked to rank 5 also, 7 also. So, weird things like biostat questions, even they left, but they have still achieved a good rank. So you have to have this faith that it's not atypical things that are going to fetch you a rank in INICET or in NEETPG. It is going to be the core basics, right? How well you know your content, how much do you understand the concepts, how much can you apply it at the need of the hour. That's how you have to train yourself, right? So no matter where you are, whether you are at borderline ranks or not so well ranks as you thought you would be, right? Or you are just at the edge, okay, of getting a clinical seat. Believe me, it's always possible to accelerate in the right gear and reach to your final destination. And when we talk about the November exam, November INICET exam is usually more about PYQs and more repeat topics. May exam is always more more new things are asked in the May exam. This is not a pattern that is new. This has been there for, I think, last 2 decades. I see a sinusoidal pattern. November exam, slightly more straightforward, more favoring the freshers, and the May exam, because there are more repeaters in the game, the paper tends to be more tricky. So you have to keep it in mind that do not gamble with the exam pattern. Make sure that you have enough depth for all topics, all subjects. Don't miss out on some subject. Let's say I keep meeting students who कहते सर रेडियोलॉजी नहीं करके गया था, मुझे लगा आएगी नहीं INICET में, ऐसा आ गई है ना. So don't bet on all these things. उसके अलावा ना, I want to tell you one very important thing that I feel made a difference in this year INICET. All of you in the chat box tell me, इस INICET में किन लोग का रैंक आया, उन्होंने ऐसा क्या किया जिनका रैंक आया? Anybody? What is the common trait between everybody who got a rank in this INICET versus people who did not get? Okay, can I? I think I know the answer, but let's see what you people think it is, and let's figure out. I think I already told that when I was introducing in the beginning, that what can be that thing which can help you become a high achiever. Although there would be an answer that Deepti would have in her mind, my answer to you is very important. It is only about the mindset. Some people after the NEETPG exam kept the pedal pressed. Remember, उन्होंने छोड़ा नहीं, एक्सेलेरेटर को दबा के रखा. कुछ लोगों ने रिलैक्स हो गए, उन्होंने बोला यार नहीं यार अभी थोड़े दिन में करता हूँ, आईएनआई वाले तो वेट कर रहे हैं मेरी, बाद में करता हूँ, थोड़े दिन में करता हूँ, और वो उन्होंने एनर्जी छोड़ दी.
So my first message to all of you is, please keep the pedal pressed for the November exam. अभी छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी. अभी बार बार ये करोगे कि सर हे भगवान नहीं हुआ नहीं हुआ, 2 महीने लगा दोगे, फिर बात नहीं बननी. ठीक है. So the only difference between the people who are winning the game are who keep the pedal pressed. ऐसा ना हो ना, एक रिजल्ट खराब हुआ, अब तो नहीं हो पाएगा, सर बताना होगा कि नहीं होगा, 2 महीने इसी में निकल गए, फिर सर कोर्स हो जाएगा क्या? अबे भाई पेडल मत छोड़, वो मोमेंटम जो बन गया वो बनाए रखेंगे तो नवंबर में रैंक आ जाएगा. And believe me, there is one thing which I see as an answer there, and that is PYQ. Please don't misunderstand and don't get, swayed by people trying to teach you PYQs. Please understand there is a pattern how it is to be done. It's not just question and answer. It is the topic. It is what depth you need to go in a topic and where you don't need to go in a depth. ये बड़ी जरूरी बात है. Please understand that. I gave an example in the class in one of the interviews as well. I said they did last INICET, they did ask about something about SLE in pregnancy. अब कुछ बच्चे थे जो उसके बाद SLE in pregnancy पढ़ने बैठ गए. वो भी PYQ था, but it was a blunder. People teaching you SLE in pregnancy was a blunder. They were wasting your time. The question had nothing about SLE in pregnancy. It was about drugs. It was about drugs contraindicated, where you had to know कि कौन सी वाली बिल्कुल नहीं देते. So you have to understand that PYQ को पढ़ाना is something that the subject, a specialist knows. I know when I see SLE in pregnancy, I know where they went or asked that question from, how it came in. So, you have to understand your time and energy is limited. Where you're going to spend your energy is the most essential part. So it's not just simply PYQ. How you do it, where you have to put in the energy is what you need to learn. So if you are getting swayed too easily, it's very simple for anybody to mug up 5 things about PYQ and come and blurt it out. So you have to understand कहां पे डेप्थ में जाना है और कहां पे डेप्थ में नहीं जाना है बच्चे. Okay? Now with this mindset in mind, now what will we do now? Now I want all of you to close your eyes and think about what went right for you in this exam and what went wrong in this exam. This is the time to introspect. एक बार सोचते हैं, ठीक है? सोच के देखते हैं ऐसा क्या था जो आप ठीक कर रहे थे, ऐसा क्या था आप गलत कर रहे थे. Okay, I'll give you examples and maybe you can answer. Whenever I give you a leading question, you can answer. Did you do enough revision before the exam? क्या आपने एग्जाम से पहले रिवाइज किया था कि नहीं किया था? That is the first thing you need to introspect. लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास जो सामान था वो इतना बड़ा था कि वो रिवाइजेबल ही नहीं था, मैंने इतना फैला लिया था कि मैं समेट ही नहीं पा रहा था. तो इंट्रोस्पेक्ट, जो आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है. मैं अंदर से ही मैं आपको वो आंसर निकाल के दूंगा. इंट्रोस्पेक्ट करना है. was I able to revise or not? Yes or no? Number 2, was I betting on PYQs too much? Now this is again a mistake. That is what is called in competitive exams is gambling. Gambling मतलब कि हमने सोचा कि यार जो पिछले साल आया था वही आएगा, वही याद कर लेते हैं. आ गया तो लॉटरी, नहीं आया तो कोई बात नहीं. लेकिन असली एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा डेप्थ में जाना है. This is one reason that if you notice in all the interviews that I've done on the DAMS-eMedicoz channel, you will find a lot of high achievers have spent year or 2 years, from 3rd year, from 4th year, understanding the concepts, making notes in the classes, and ruling out choices on the real day of exam. Number 2 thing is exam skill. Exam skill का क्या मतलब है? This particular exam was slightly on the tougher side. There were around 5 to 8 questions which were not doable. Yes. Now exam skill का मतलब है what do you do when you see 5 non-doable questions? Okay, सोच के देखना. एक बच्चा है 5 ऐसे क्वेश्चन आगे बायोस्टैट्स के, यार कभी नहीं सुने, कभी देख ही नहीं सुने, इमीडिएटली ब्लैकआउट हो गया कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसने पेपर खराब कर दिया. दैट इज वन रिस्पॉन्स. नंबर 2 रिस्पॉन्सेस, चल यार नहीं पता, सब में तुक्के मार देता हूं कि सबके आंसर बी होंगे, 5 नेगेटिव लेके आ गया. ठीक है. एक कि जिन क्वेश्चंस में आई एम नॉट एबल टू रूल आउट एनी ऑफ द चॉइसेस, आई विल लीव देम, आई विल मेक द अदर आंसर्स काउंट.
मैं बाकियों पे मेहनत करूंगा जो टॉपर्स ने किया। ज्यादातर इस साल के टॉपर्स ने 192 ऑड अटेम्प्ट किए थे, 192 के लगभग, 190, 191, 192 ये somewhere रेंज between में, 190 and 195. 195 से थोड़े कम ही ज्यादा है। तो ये पिछले साल से अलग है। नवंबर के एग्जाम में ज्यादातर 195 प्लस थे, 196 प्लस थे, 197 प्लस थे, 199 वाले भी थे। इस बार मुझे कोई भी नहीं मिला। सो द टॉपर्स न्यू दैट दे कुड लीव दोस 5 क्वेश्चंस जो नॉट डूएबल थे और बाकी पे बेट लगाते। तो उसको कहते हैं एग्जाम स्किल। वॉज इट योर एग्जाम स्किल विच वॉज द कल्प्रेट? अब देखो, आई कीप सीइंग सम स्टूडेंट्स विल से सर मेरी प्रॉब्लम एग्जाम स्किल की थी। फिर हमें अपना रैंक या नंबर ऑफ करेक्ट्स देखने। इफ माई रैंक इज एट 25,000 प्लस, 30,000 प्लस, इट्स आगे जा रहा है, और मैं कहता हूं सिर्फ एग्जाम स्किल की गलती है, तो गलती है वो बात। ऐसा नहीं है, कंटेंट की भी गलती हो सकती है, रिवीजन की भी हो सकती है, एग्जाम स्किल की भी हो सकती है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर पता चल जाएगा तो सुधार लेंगे तो इंप्रूव कर जाएंगे। इफ आई एम एबल टू फाइंड व्हाट वेंट रॉन्ग, आई विल बी एबल टू इंप्रूव, आई विल बी एबल टू डू बेटर इन दी सब्सिक्वेंट एग्जाम. And you have been sending us a lot of messages and we are reaching out, and there is one thing I want each one of you who's listening to us to do it when you reach out to us is a strength weakness analysis. Please take a piece of paper, mark 2 columns, and in one column you're going to write your strength. Is content your strength? Do you think that you have a good base and you know your content well? Yes. And how do you get to know that? You get to know that when you see the usual questions, right? You are not doing them wrong. I am not talking about vague or irrelevant things. I'm talking about usual topics. Even if they're asked in depth, are you able to do them right or wrong? Which means, is your knowledge a little superficial or is it in depth, especially for topics which have high probability of being asked? Right? The second area to introspect is it my MCQ skill? Which means, ma'am or sir, I always revisit a lot of questions. I keep them for review. I change a lot of them, and then most of them turn out to be wrong. That is a problem with the exam skill. Time management is a problem with the exam skill, right? And then finally, when you see multiple completion or multiple correct questions, if you get confused, that is again MCQ skill. So that is the second area that you must introspect, right? And third is revision. So maybe you can talk about that. So what I want you to do is, I want you to look at this small table in between us. Okay. So if you felt when I told you to introspect, अगर आपको लगता है कि content मेरा culprit था, my problem was the content. So the content that you should have is your own handwritten notes. अगर खुद से नहीं लिख सकते तो आपने प्री मेड लिए, लेकिन आइडियली खुद से लिखे होने से ज्यादा रिटेन होता है, ज्यादा रिवाइज कर पाते हैं. सो कंटेंट इज योर नोट्स. डिड यू डू द मिस्टेक ऑफ ओनली वॉचिंग द वीडियोस मल्टीपल टाइम्स? तो फिर रिवाइज नहीं कर पाते. तो कंटेंट इज द फर्स्ट थिंग टू डू. नाउ टू बिल्ड अप योर एमसीक्यू स्किल, देयर आर 2 things. I need to have a daily MCQ habit. I need to be doing 50 questions every day to get a MCQ habit, but that is not enough. सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना DQB से काफी नहीं है, टेस्ट भी देने पड़ेंगे. तो ये मिक्स करना है. अगर आपका कंटेंट आप कर चुके हो, नोट्स आप बना चुके हो, तो अब की बार टेस्ट करेंगे, TND करेंगे, ग्रैंड टेस्ट करेंगे. अगर कंटेंट नहीं है तो कंटेंट भी बनाएंगे और टेस्ट भी करेंगे. मतलब दोनों में से ऐसा नहीं है कि ये कर लूं कि ये कर लूं, दोनों करने की जरूरत है. एंड इन द रिवीजन डेफिनेटली विल हैव DVT, APYQ कबाब एंड AIIMS कैप्सूल. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, if you are able to find out what is the problem, if the problem is content, let's work on content. If the problem is MCQ skill, रोज 50 क्वेश्चन करने. I want you to do 50 questions every day. Finish your class test, finish your TND, grand test, subject wise test. टेस्ट देने से उस स्किल को पूरा करेंगे. उसके बाद ना, आई वॉन्ट यू टू सी अ स्मॉल स्टेयरकेस इन फ्रंट ऑफ यू. अब जब दोबारा पढ़ रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में सारा रिवाइज हो जाएगा. पहली सीढ़ी होगी कि फर्स्ट रीड थोड़ी सी एक्सटेंसिव होगी. मैं समझाता हूं. दैट सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर एग्जाम और द NEETPG एग्जाम. इफ यू फॉलो द टेस्ट एंड डिस्कशन शेड्यूल, पहले आप अक्टूबर मिडल तक एक बार ये TND को खत्म करोगे. दैट विल बी योर फर्स्ट रीड. TND के साथ नोट्स को फिर रिवाइज करोगे, अपनी गलतियां देखोगे, टीचर की बात सुनोगे. यू विल एक्सप्लोर एंड यू गो इनटू द डेप्थ दैट डॉक्टर दीप्ति वाज टॉकिंग अबाउट. देन इन द सब्सिक्वेंट रिवीजन यू विल गो ओनली नोट्स
Second revision only TND notes. Final revision only DVT, only DVT, only DVT. In the first TND papers, in the second revision SWTs, and then it will be only grand test, CBT, mock test, they will increase. शुरू में grand test कम frequency, by the time we go to the subsequent steps, increase the frequency of giving the grand tests. Okay, so I will also like to highlight something very important that Dr. Sumer has just suggested. So if we are starting now, whether we are starting for the November exam or we are going up till the NEET exam, please understand your target should not be jaldi. Yes, a lot of you think, acha jaldi se kar lete hain. Please remember, if you are in a hurry to do the things, you are definitely going superficial. And as Dr. Sumer said, the initial part of your preparation, yes, which could be along, 2 to 3 months, it has to be being thorough with your notes. This is a strategy which any topper, if you talk to, would say. They don't go retrograde right from the beginning. You can't go selective right from the beginning. But when you start, your preparation has to be broad. It has to cover more topics. It has to be more wide, because you have to prepare for a competitive exam. You cannot go selective right in the first go. So it is a very kind request to each and every one of you. Please, anybody asking you to go selective from right now, beware that you are already compromising your preparation. This is not the time. This is the time to build up. Okay, build up your content, be thorough, take 2 to 3 months, be thorough with your notes, and then comes the PYQ. Then it's a good time to start seeing the topics where PYQs have been asked. Then it is the time to go retrograde. This is the time that you start going retrograde and you start the process of going selective. Mind you, if you go selective right in the beginning, there is a big chance that you are, probably losing out on many questions just because you went selective. And please, this idea of कि NEET ऐसे सवाल पूछता है, INICET ऐसे पूछता है, get out of that. I have seen so many factual questions in INICET, not just in this session, in the previous sessions as well. One-liners, image-based questions, clinical questions, and same holds true for NEET. Anyone who had or was well prepared for NEET, even, when they were not really going all out for INICET, have done quite okay in INICET, which means top 50, top 100 ranks I'm talking about. Yes, so if your base is preparation is wide, you have scope of going selective. If you go selective right from the beginning, you are compromising your study, and then yes, you would get a compromised rank. So pehla, be thorough, then start rolling in PYQs, select topics, and side by side start working on your weak zones. A wrong diary एक ऐसी चीज है जिसके बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती. No matter what you do from wherever, if you are not maintaining your own wrong diary, following hundreds and thousands of PDFs and whatever you might take from here there will not fetch you a rank. You will come to a plateau. Okay, because you are trying to read what the others are reading. You have to understand that you are in a plateau because you have reached your limit. Now, in order to move forward, you need to find out where you lack. You can't be doing something because your friend is doing something. Do you understand that? एक wrong diary का habit शुरू से बनाओ. And I assure you, you can start your revisions today itself if you have a practice of making a wrong diary. ये 3 चीजें सर ने 2 हाईलाइट करी है, मैं तीसरी हाईलाइट कर रही हूं. Anti-grade thoroughness with your notes or with your content, plus a daily MCQ practice, plus a daily revision. 1 hour minimum has to be dedicated every day to revise something old. आज भी मैं एक रैंकर का इंटरव्यू ले रही थी, रैंक 49, and I specially asked him for you people कि भाई जो volatile subjects हैं, pharma, micro, right, PSM or patho, sometimes you feel there are too many markers and all those things. How do you tackle that? So please understand, anybody who knows that these are volatile but has to do it will be dividing them into smaller fragments,
will be trying to cover one fragment, at frequent intervals. You have to dedicate 1 hour every day to revise something old. And what has to be revised will come from your wrong diary. So if you're not maintaining it, then you lose track of your own preparation, right? Now, what I wanted to add here is I just wanted to answer 2 questions that students have asked me recently. एक बच्चा आया मेरे पास सुबह आज, वो कहता है कि सर मेरा इस बार के INICET में I have a rank of around 20,000 and I want to prepare for the November exam and I came to you for strategy and I just want to tell you my strategy. मैंने बोला बता भाई तेरा क्या strategy है? कहता है सर मैंने सोचा कि अगले 30 दिन में ना एक बार सारा सिलेबस कर लेता हूँ, फिर उसको बार बार रिवाइज करता रहूँगा. सो प्लीज एवरीबडी इन द चैट बॉक्स मुझे सोच के बताओ, 20,000 रैंक है इस बार, कह रहा है 30 दिन में एक बार सारा सिलेबस कर लेता हूँ, फिर मैं बार बार रिवाइज कर लूंगा, बात बन जाएगी. मैंने बोला किसी ने देखो ना मैजिक पोशन बेचा है कि यार तू जादू हो जाएगा. मैं समझाता हूँ. 30 दिन में अगर मैं 19 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूँ, आई एम गिविंग 1 डे पर सब्जेक्ट. 1 डे पर सब्जेक्ट में क्या ही रिवाइज करेगा, क्या ही डेप्थ क्रिएट करेगा. जैसे अभी डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि हमें डीप जाना है, हमें डेप्थ करनी है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हम रूल आउट कर पाए. लेकिन अगर बहुत जल्दी से पहली रीडिंग कर लोगे अभी, तो फिर वो डेप्थ फिर से नहीं आएगी, फिर से सेम प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी. इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार जब हम करेंगे अभी इस एग्जाम के बाद, वो क्लॉक दोबारा से शुरू हो गया है. शुरू का जो फेज होगा, पहले हम उसमें कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, फिर मल्टीपल रिवीजन करेंगे. अच्छा सुनो, यहाँ डेप्थ में भी ध्यान से सुनो, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं डेप्थ में कहां जाना है, जहां पे फायदा हो. आप मेरी बात समझ रहे हो? हर चीज के डेप्थ में नहीं जा सकते हम. देयर आर 19 सब्जेक्ट्स. you know if you imagine the depth of this material, it cannot be probably done in one lifetime. So please, when you listen to us, you have to listen to us very carefully, and that is where the role of teachers comes in. When we say depth, it has to be of areas which are high yielding, areas which have high probability of being asked, areas which we know are in the current trends, right? Going into depth of everything is a futile effort. So you have to take help, right? In order to understand where I need to go into the depth, where I need to cut it at a certain level, उससे ज़्यादा नहीं जाना है. Because believe me, otherwise you will create material for you which is non-doable, non-revisable, and it only leaves you with feeling of uncertainty. We have to do things in a way which bring confidence in us, which tell us that yes, we are on the right track. And that is why whether you're on the right track or not comes from grant tests. Now again, listen to me carefully. A lot of times you've told us कि grant test easy नहीं था इसलिए हम नहीं कर रहे हैं. And this is what you have to be prepared for. अगर ग्रैंड टेस्ट हम मान लो आप ही हमें 50 MCQs दे देते हो सिलेक्ट करके और मुझे बोलते हो मैम इसमें से किसी 30 का मेरे लिए टेस्ट बना दो, तो अच्छा करोगे क्या तुम? Obviously there is a selection bias. You have selected those things for you which are an eyewash, which you have probably mugged up, you remember, or you are fond of doing, right? So when you do a grand test, it has to come from someone who knows what to ask. Making things up for yourself may not be the right strategy at this level. Okay, we are all in the process of learning. We get better every time we do it. But till the time you have reached your best version, you have to have faith that some questions would be easy, some would be moderate, some would be difficult. I shouldn't be getting scared of a grand test because it seemed a little difficult. You have to prepare yourself that this is something which is going to tell me where I need to focus my energy, and that's how you look at a grand test. Change the idea with which you appear in a grand test. So many of you are only seeing your ranks. Why? Is it a real exam? Do you think everybody is giving it genuinely? Do you think the paper is made genuinely? You should only look at your correct questions. Because you don't know what others are doing. Genuine, non-genuine, whatever, selection bias, whatever. But you know that you are genuine. So if you see that you were at 110 and you are still at 110 correct after 3 months of preparation, you need to have a wake-up call. And the sooner it is, the better it is. So don't shy away from grand tests. Let it be your rock bottom, okay?
please be aware that once you have an insight that this is where I lack, then there is scope of improvement. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में कमी क्या है, मैं अपने हिसाब से बेस्ट हूं, तो फिर तो there is no scope of improvement. So change the mindset with which you look at a grand test. Stop seeing your percentiles, percentage, your friends' marks, XYZ. You have to see where you stand and you have to see your progress. So if you are studying well with the right amount of things, where depth is required, where not required, you have to sort of judge and take help wherever needed. And if your graph is moving up, you just be confident that you're doing fine. And that's how it has to be. अच्छा, एक क्वेश्चन है तो बहुत सारे और बच्चे मेरे पास कल से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सर नीट पीजी टीएनडी करूं कि आईएनआईसीटी टीएनडी करूं. देखो, मेरा ना बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है. मेरा नवंबर के एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हम नीट पीजी टीएनडी करते हैं, क्योंकि नीट पीजी टीएनडी में दैट इज द क्लासिक डैम्स टीएनडी इज कॉल्ड एज द नीट पीजी टीएनडी. That is the first TND that I invented. I test and discussion TND is a term that I coined. I started this course. The entire syllabus, how it should be run is devised by me. So whenever I think of the November exam, I make a NEET PG TND as my ideal TND because I put both INI pattern and NEET PG pattern in that discussion. Plus NEET PG TND mein you also get access to back to basics videos. So that if you want to listen to any topic at detail, you get the regular class videos also. और सॉफ्ट कॉपी में सारे हार्ड जो नोट्स अभी हमने रिलीज किए उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको ऐप पे मिल जाती है. तो अब क्या होता है, बिकॉज द एग्जाम इन नवंबर इज यूजुअली क्लोजर टू द नीट पीजी, इट मेक्स सेंस टू प्रिपेयर फॉर बोथ. एक की तैयारी करने से क्या होता है, आप एक इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो जो कि गलत थॉट है. आपको ब्रांच की तैयारी करनी है. योर गोल शुड बी आई वॉन्ट टू गेट द ब्रांच ऑफ माई चॉइस इन द बेस्ट पॉसिबल प्लेस. तो चाहे वो हमें नीट के एग्जाम से मिले, चाहे मुझे आईएनआई से मिले, आई वॉन्ट टू टेक द बेस्ट ब्रांच दैट आई रियली वॉन्ट टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट. उसमें दोनों की तैयारी करने में ज्यादा लॉजिक है. दैट इज वाई इन द मे सेशन, बिकॉज द नीट पीजी इज फार ऑफ, वी रन टू सेपरेट टीएनडीज. इन द नवंबर सेशन वी रन अ सिंगल टीएनडी कॉल्ड एज द नीट पीजी टीएनडी. लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे तो सर सिर्फ नवंबर की आईएनआई के लिए पढ़ना है. उनके लिए वी हैव केप्ट अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ आईएनआई टीएनडी जो आप रिकॉर्डेड अपनी सेल्फ पेज देख सकते हैं. बट आई वुड स्टिल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट प्लीज प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर एग्जाम. इन एडिशन टू दिस, क्या सर मैं कर पाऊंगा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर मेरा तो रैंक खराब आया, मैं कर पाऊंगा. आई नो ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ अ बच्चा ऑल्सो जो 60,000 रैंक पे था नीट पीजी में. इस बार उसका इंटरव्यू लिया मैंने, टॉप 25 में आ गया. बहुत सारे बच्चे इंप्रूव करते हैं. बट देर आर पीपल हु इंप्रूव, देर आर पीपल हु डोंट इंप्रूव. इट इज अ प्रोसेस एट द एंड ऑफ द डे. प्रोसेस है, कोई जादू नहीं है. जो भी जादू हम सीख करते हैं तो वी गेट ट्रैप्ड. हम सोचते हैं कोई आके जादू कर देगा, कोई आके रटवा देगा. नहीं बनेगी बात. हमें 4 चीजों पे काम करना है. वो क्या है? कंटेंट, एमसीक्यू स्किल, टेस्ट, रिवीजन. ठीक है, ये 4 चीजें. बस इन 4 चीज में जो काम कर रहा है वो जीत जाएगा. इंट्रोस्पेक्ट दोबारा करो. क्या मेरी प्रॉब्लम मेरे कंटेंट में थी? क्या मैंने नोट्स नहीं बनाए थे? क्या मेरे नोट्स बहुत ज्यादा थे, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा था? अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो कंटेंट पे काम करेंगे. डेली 50 एमसीक्यू होने ही होने. रोज सुबह उठ के 50 क्वेश्चन करने हैं डीक्यूबी से. एंड यू विल फाइंड द क्वेश्चंस इन डीक्यूबी वेरी 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 प्रिसाइज, जस्ट एट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आंसर. हम बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन, मेरा बिलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोग कर नहीं पाते. ये एमसीक्यू स्किल हो गया. फिर टेस्ट भी तो करने हैं. 3 लेवल टेस्ट है, क्लास टेस्ट, एसडब्ल्यूटी, ग्रैंड टेस्ट. इन डैम्स ऑन योर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सीटी, एसडब्ल्यूटी, जीटी ऑल कम विद वीडियो सॉल्यूशंस. तो टेस्ट के बाद मैं चाहता हूं whatever mistakes you do, go back to the videos so that आप mistakes को improve कर रहे हो. Like Dr. Deepti said, test is not a judgment on you, it's a learning opportunity. सीखना है आपने, growth mindset रखना है. And in addition to that, revision में DVT, AIIMS कैप्सूल, INI से पहले AIIMS कैप्सूल कर लेंगे, फिर DVT कर लेंगे, और फिर PYQ के बाद को हम उसके अंदर INI से पहले INI का PYQ कर लेंगे, और NEET PG से पहले NEET PG का. And recently we have added a few videos for the UPSC PYQs also in the PYQ sessions. अगर आपने ना देखे हो तो उसको भी देखने से फायदा मिलेगा. It's a process. एक बार खुद से सोचो और सोच के मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अगर कोई बात प्रोसेस है तो क्रैक कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं. डू यू एग्री और नॉट? यस और नो?
अगर प्रोसेस है तो कर सकते हैं, अगर मिरेकल है तो फिर भगवान कर सकता है, अगर प्रोसेस है तो आप कर सकते हो। प्रोसेस सिंपल है, जो कमी है उस पर काम करते हैं, कंटेंट में कमी है तो उस पर काम करते हैं, एमसीक्यू स्किल नहीं है तो वो बनाते हैं, आदत डालते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद गलती को एनालाइज करते हैं, वीडियो सुनते हैं टीचर क्या कह रहा है और बार बार रिवाइज करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस एंड इफ आई टेक यू बैक टू द प्रोसेस अगेन, पहला स्टेप प्रोसेस का ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि पहले स्टेप में डेप्थ बढ़ानी होती है, सरकमफ्रेंस बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। फिर हम वी स्टिक टू व्हाट वी हैव मेड, फिर सिर्फ नोट्स, पहले क्लास नोट्स, फिर टीएनडी के नोट्स, फिर सिर्फ डीवीटी। हम छोटा करते जाते हैं मटेरियल को और कंडेंस करते हैं और मल्टीपल टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ कंटेंट। एमसीक्यू हैबिट, 50 एमसीक्यूज पर डे फ्रॉम डीक्यूबी इज अ एनफ एमसीक्यू हैबिट, उतना ही करना है। लेकिन टेस्ट देना नहीं भूलना, क्लास टेस्ट, एसडब्ल्यूटी, ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, और भूलना नहीं सीबीटी। आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन द डैम्स सीबीटी वेबसाइट, हम 4 सीबीटी करेंगे इस साल, 1 नवंबर आईएनआईसीटी से पहले और 3 नीट पीजी से पहले। आपको कंप्यूटर सेंटर्स पे भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा, डोंट फॉरगेट टू डू दैट पेपर्स। And then DVT, AIIMS capsule, PYQ will be your revision resources. It is a process which can be done to improve yourself. So if I now, I open the house for your queries as well, and I think we've been doing your queries side by side, a lot of them. I'll ask Dr. Deepti if she has something to add here, but मुझे सिर्फ ये बात आपने याद रखनी, मैं हमेशा अपने आप को ये बताता हूं, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीज प्रोसेस है तो फिर वो की जा सकती है, अगर एक बार समझ आ गया तो हम कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई मिरेकल है तो फिर तो वो लक फैक्टर हो जाता है। इट इज नॉट अ लक फैक्टर, इट्स अ प्रोसेस, आप कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर पाएंगे। Right. So somebody has been constantly asking that yes, without timelines, you do get haywire in your studies, which is true. That is why you need targets. So that is why there are 2 ways to do it. So you have to know in which category do you belong. If you are someone who is good at making your own targets and sticking to it, you can do that and study on the basis of that. And as I said, first 2-3 months, and this I'm saying for the November exam especially, be intensive on your theory for first 3 months, right? Cover up your backlogs, revise, focus on the theory content for first 3 months. This is for those who are specially preparing only for the November INI exams. If you are going until NEETPG, you can definitely take longer. You can actually go double that as well, right? So you need to build up your content, but when we say that, you have to do it with targets. So very, very important. If somebody is not doing a live class, but they are doing back to basics, right? And you don't have targets or you can't make targets on your own, a good way to think is that if the subject is a very vast subject, right? For example, medicine hai, surgery hai, right? These are really, really vast subjects. So if it is a vast subject, keep your initial reading as 10 and the upper limit as 14 days. So this is for vast subjects. For medium level subjects like Obs Gyne, I would say is medium subject, which is in terms of the vastness simply. You can go up to from 7 days to an upper limit of 10 days. This is again for your first reading. For your shorter subjects, you can keep a range of 3 to 5 days. So a subject like radio, ortho, derma, usually your first reading, I think 5 days should be good enough as an upper limit to do it. Now suppose you have these limits, but you go a little overboard, it is still okay. And if you don't have any limits, then I realize कि 3 महीने तो तुम सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी कर रहे होते हो, right? You're just doing those videos with no end and eventually still remembering nothing. So please have your own targets if you are not doing a live course. That is one thing I definitely want to say. If you are doing a live course with us, we give you targets. So sticking to the target is the key. Even if you have not finished your syllabus by that time, you have to move on. And you have to keep the remaining part as a pendency. And then dedicate extra hour. जैसे ड्यूटी में होता है ना, काम खत्म नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम लगाओ और खत्म करके जाओ. So then the pendencies have to be finished by keeping or dedicating extra hour, let's say towards the later part of the day or towards the night where you're finishing the previous subject ka pendencies. But the idea is to keep an upper limit
and then move on even if the syllabus is not finished. Similarly, for bachas who are doing a live TND with us, for example, NEET TND will be a live TND, a schedule will be given to you. Please stick to the schedule. Don't make your own schedules. अगर हमने बोला है कि इतने पार्ट ऑफ फार्मा को एक हफ्ते में खत्म करो, तो कुछ सोच के बनाया गया है, राइट? सो one day here and there, it doesn't make a difference. Even 2 days probably is okay. But हमने बोला एक हफ्ते में करो और तुम 2 हफ्ते में कर रहे हो, is not justified. अगर 2 हफ्ते लगेंगे तो we will divide it like that for you, because we understand how much time you would take, because we are all medicos who have done these things. Okay? If you are doing an INICET TND, right? Suppose you take up the INICET TND, what we are going to do for you is, I'm going to tentatively put a schedule. Those are pre-recorded videos which we did for the May session. But we will put up a schedule for you so that it becomes easier for you कि अच्छा ये schedule है, मुझे इसको follow करना है. In case you don't want to do that, then you make your own schedule. Anybody who is reading without targets is actually fooling themselves. Now the problem is, to so many bachas, when I say, you know, write down your strength, weakness and send it to me and I'll help you out. Consistently, the strengths that I'm getting is, I can sit for 12 hours. And then I was really wondering, everybody is studying 12 hours, 13 hours, which means hard work is not the problem. You are all putting in a lot of hard work. Lekin, I'm going to say something brutal, but you have to understand. Hard work घोड़ा भी करता है और hard work गधा भी करता है. Yes, but smart study करना बहुत ज़रूरी है. Targets के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. जितने well defined आपके targets होंगे, उतना आप उनको achieve करोगे. Yes, so despite the fact both the, you know, areas, there is hard work, but one is rewarded more than the other. Do you realize this? So हमें किस तरह का हार्ड वर्क करना है वो आपको सोचना है. वो सबके हमारे खून में है मेडिकोस के हार्ड वर्क करना, उससे हम पीछे नहीं हटते, इसीलिए यहाँ तक आए हैं. समझ रहे हो? वो आप सबकी स्ट्रेंथ है, पर बेटा जी उसको सही जगह लगाइए. 12 घंटे पढ़ोगे फिर भी श्योरिटी नहीं है रैंक की अगर उसमें स्मार्ट स्टडी इंक्लूडेड नहीं है. एंड दिस शुड हिट यू हार्ड. Okay, the first time I'm trying to be brutal because I think I need to be, because each one of you is working very hard, but some of you are just randomly studying. Please study with well-defined targets, not just for a week. I request you to make short targets even for a day. Me and Dr. Sumer, you won't believe it, we still day-to-day work with targets. When we come to office, we take a white sheet of paper, we did it even today. What are the targets for us for today? Even if we are in the office till 6 o'clock or till 8 o'clock or till 10 o'clock, we sit, we discuss targets, we finish them and only then go back. That's how it has to be. Always, no matter what level you reach, where you reach, you have to work with targets. That's a kind of a surety that you are going to be rewarded for what you're going to do. So are you going to promise me that you're all going to work like horses? Yes, putting your energy and time in the right direction. So right, do we have an emoji for that? A horse and a donkey? Yes, I want you to all tell me that you're going to be a horse and a horse. Yes? अच्छा, एक चीज ना मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है और भी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत पिछले 4-5 दिन में बहुत सारी क्वेरी ऐसी देखी है. एक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने कंटेंट है नहीं, मैंने कभी क्लास नहीं की, कभी नोट्स नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, मैं क्या करूं. मेरा जिंदगी में एक मानना है कि जो चीज जरूरी है वो करनी ही पड़ती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज नेसेसरी, व्हाट नीड्स टू बी डन हैज टू बी डन, एंड सम थिंग्स विल टेक सम टाइम. कुछ चीजें कुछ टाइम लेती हैं, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाते. तो जैसे पढ़ना है पहली बार, आप अभी तक पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बच्चे ऐसे जो भी इंटर्नशिप खत्म किए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है किसी तरह से यार तेज भाग जाऊं, यार 1 महीने में सारा सिलेबस हो जाए. मैं पहले भी बताया, हो नहीं पाएगा. 1 महीने में नहीं कर पाओगे. पहली रीडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा और वही टारगेट भी रखना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू फिनिश इट, वी वांट टू फिनिश इट वेल. हम खाली खत्म नहीं करना चाहते, हम अच्छे से खत्म करना चाहते हैं. इसके ऊपर ना वॉरेन बफेट का एक कोट भी है
एक बार वॉरेन बफेट से एक आदमी ने पूछा कि मैं भी आपकी तरह अमीर होना चाहता हूँ, क्या करूं? तो उसने बोला यार हैव पेशेंस इन योर इन्वेस्टमेंट्स, हैव पेशेंस। तो आदमी कहता है यार नहीं नहीं मुझे तो जल्दी करना है, जल्दी करना है। उसने बोला नहीं भाई, हैव पेशेंस, सम थिंग्स टेक टाइम। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे जल्दी करना है। कहता है जस्ट लाइक अ बेबी इज फॉर्म्ड इन 9 months, विद एनी टेक्नोलॉजी यू कैनॉट एक्सेलरेट इट। 9 महीने होने ही लगने ही पड़ेंगे, ज्यादा एक्सेलरेट करेगा प्री मेच्योर बर्थ होगा, बच्चा सही नहीं बनेगा। उसी तरह एग्जाम की तैयारी भी है। सो वट एवर नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन। अगर तेरे कंटेंट में कमी है तो कंटेंट पे काम करना ही पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लग रहा टाइम कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। ये ना हो कि आपको प्रॉब्लम कुछ और हो, आप सॉल्व कुछ और कर रहे हो। इसको ऐसे सोचो, एक आदमी की अंगूठी खो गई और वो लाइट के नीचे ढूंढ रहा था, फिर और लोग आते हैं वो भी वहां ढूंढने लग गए। बाद में सब लोग आते हैं, वो कहते हैं कहाँ ढूंढ रहे थे? कहते यहाँ। कहते खोई कहाँ थी? कहते खोई तो कहीं और थी लेकिन वहां अंधेरा था इसलिए ढूंढ नहीं रहे हम। मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, तभी रिजल्ट आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मेरे हिसाब से जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको पता होता है कि हम कहां गलत जा रहे हैं, हम सबको पता होता है हमारे में कमी क्या है, हमें हमेशा पता होता है हम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कोई क्विक फिक्स मिल जाए। जैसे एक मरीज होता है ना, आप तो डॉक्टर आप समझ पाएंगे कि जो मरीज होता है हमारे पास आता है, जब उसको बीमार होता है हम उसे कहते हैं तुझे एंटीबायोटिक खानी, किसी को ट्यूबरकुलोसिस होती है हम कहते हैं एटीटी खानी है। उसको लगता है नहीं यार कुछ शॉर्ट में नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, कुछ जल्दी नहीं हो सकता। फिर उसको कोई ना कोई आके स्नेक चार्मर आके, कोई और अपना झोला छाप डॉक्टर आके उसको कोई एक फटाफट से जुगाड़ उसको दे देता है और उसे इलाज होता नहीं। उसको जो जितने टाइम का ट्रीटमेंट चाहिए उसी तरह से मेडिकल साइंस में जो अपना कंटेंट है थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लगाना पड़ेगा। बहुत जल्दी खत्म करने में फायदा जरूरी नहीं है कि हो, समझ रहे हो मेरी बात? खत्म करेंगे, टाइम से करेंगे, टारगेट से करेंगे, मगर अगर गोल सिर्फ खत्म करना रहेगा तो कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई होगी। जैसे हो सकता था, मैं सोच रही थी कि क्या कोई मुझे इमोजी भेजेगा हॉर्स विद विंग्स, मतलब मैं तो खाली हॉर्स ही नहीं, मैं तो विंग वाला हॉर्स बनूंगा। तो कौन सा होता है? यूनिकॉर्न, पेगासस। मगर आपको पता है ना वो क्या है? वो एग्जिस्ट नहीं करते, फैक्चुअल है। ठीक है, तो बात समझो, फैक्चुअल फिक्शनल बातें हमने नहीं करनी। हम सुपर हीरो हैं लेकिन हम दूसरी तरह के सुपर हीरो हैं जो जान लगा देते हैं, जादू वाले सुपर हीरो नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मेरे तो लगभग हर क्लास में मैं बोलता हूँ, मेरे को लगता है आप फिर आपको बताता हूँ, मैंने ना जिंदगी में ना बिना मेहनत के सक्सेस सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है। कोई बता सकता है? दो मान लेते, चलो 2 तरीके ऐसे जहां आपने मेहनत भी नहीं की आप सक्सेस मिल गया, बता सकते हैं? ऐसे 2 ही तरीके हैं। पहला है बोलो लॉटरी। ये लॉटरी लग गई, बाय गॉड कुछ भी नहीं किया, लॉटरी लग गई। मेरी जिंदगी में मैंने मेरे किसी जानने वाले की लॉटरी लगते नहीं देखी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। सो पहला लॉटरी जो कि मैंने, आई फील इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, मिलती नहीं है, मेरे तो कभी नहीं लगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका, यू इनहेरिट सक्सेस। ये भी नहीं हो पाता। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पूरे सोसाइटी में फिल्म स्टार्स के, पॉलिटिशियंस के पड़े हैं जहां पे उनका पास बहुत बड़ा लेगेसी था फिर भी नहीं जीत पा रहे क्योंकि इनहेरिटेड भी नहीं हो पाता सक्सेस एक ही तरीके से आता है। और ये लाइन ना मेरे को लगता है मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आई विल इनवाइट डॉक्टर दीप्ति कि वो आज इस लाइन को कंप्लीट करेगी कि अपना टाइम, डॉक्टर दीप्ति प्लीज, अपना टाइम डेफिनेटली अपन खुद लाएगा, लॉटरी से नहीं आएगा, अपन खुद लाएगा, कोई और तरीके से नहीं आएगा। एंड यू आर ऑल वेरी केपेबल। यार जिसको अपनी केपेबिलिटी पे डाउट है वो पहले तो वो डाउट हटाओ। आई रियली डोंट सी कि आप अगर केपेबल नहीं हो तो कौन है। यस, यू हैव IQ, यू हैव हार्ड वर्किंग स्किल्स, you have other skills that you have developed over these 5.5 years. You have everything. It's just the right strategy in the right direction to know where you need depth, to know where you don't need depth, to know when do you go intensive on notes and when you start retrograde, to know when you have to work hard on your MCQ skill and on your revision. These are the areas we need to take some time and think upon. आज के लिए जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके लिए ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है? पहला, एक पेपर लोगे, 2 भाग में डिवाइड करोगे, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करोगे, मुझे बताओगे, राइट? पहली चीज। दूसरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी सिंगल डे योर डे शुड हैव 3 थिंग्स।
some anti-grade reading, some MCQ skill, and some revision. If every day you are doing these three things, nobody can stop you from being a high achiever. Believe me, you don't need to have a super high IQ for it. You don't need to be a topper for it. You can make yourself a topper. That's the art. Okay, भाई एक तो हो गया गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, हैं ऐसे लोग भी होते हैं गॉड गिफ्टेड हैं, मगर उनका भी बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता, राइट? नाउ इफ यू आर नॉट गॉड गिफ्टेड और सुपर ब्रिलियंट, कैन वी ट्रेन आवर ब्रेन? Yes, that's why that organ exists. You train it, you become better, you teach yourself by feeding it the right things. Yes, so you can improve in whichever part you feel you lack. पर पहले acceptance तो आनी चाहिए भाई. accept तो करो कि these are my weak areas, I have to work on it, and there will be no magic. I need to work hard, but like a horse, not like a donkey. And then I have to keep a check on myself. Keep a check on myself that am I losing track in between? Because when you become a horse, sometimes you want to become the horse with the wings, which is not going to happen, right? So you need to keep a check. Slow down a little when you need. Go back to the content where you feel your MCQs are इस टॉपिक में बार बार गलत हो रहे हैं, तो भाई फिर ये सिग्नल है कि ये टॉपिक या तो दोबारा नोट से पढ़ या फटाफट इस टॉपिक का वीडियो दोबारा देखो. सिलेक्टिव. सो फर्स्ट गो थरो, देन गो सिलेक्टिव, देन कीप गोइंग मोर एंड मोर एंड मोर सिलेक्टिव. रॉन्ग डायरी जरूर बनाएंगे, डे 1 से बनाएंगे, और रिविजन डे 1 से नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता रॉन्ग डायरी बना लो, उसके बाद से रिविजन भी शुरू कर पाओगे. रिविजन एंड में नहीं होती, साथ साथ होती है. इट्स एन आर्ट. You have to learn the art of doing it. Okay? So I think we will re-emphasize what we have talked about today. पहला हमने आपसे बात की, I'm again repeating in Hindi English both, is अपना टाइम आता नहीं है, अपन खुद लाएगा. अपना टाइम अपन खुद लाएगा, ये बार बार याद कराना है. Once you take the control back, once you take the accountability back to you, सब कुछ होना शुरू हो जाता है. Second thing to remember is we can improve from any rank in a subsequent exam if we believe that the ranks are just numbers and we can work on them. Third, we need to find out where we are going wrong and what is required to be done. We need to do it. If your content is the problem, you need to get into a regular classroom, face to face classroom. जितना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लगाते हैं, ठीक है. कंटेंट की प्रॉब्लम है तो कंटेंट को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू की प्रॉब्लम है तो टीएनडी से सॉल्व करेंगे. ऐसा ना हो कि आप जल्दी के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर दें, ठीक है. जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे. वी एक्सेप्ट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन वी विल सॉल्व इट. नंबर 4th इज दैट वी हैव ऑलरेडी सेड, if we follow the process says that work on your content, work on your MCQ skill, work on your testing skill, work on your revision skill. Process है, process करेंगे, drill है तो फिर जीत जाएंगे. It is just like sports. जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि एक अगर खेलना है तो एक तरह से बॉल फेंकने की 100 बार फेंको, 1000 बार फेंको, अल्टीमेटली परफेक्ट हो जाते हो. So you need to learn that it's a process. Let's do it again and again. And I want to now use this time to tell you a line which you will all repeat with us in the chat box. वो ऐसी क्या लाइन है जो हम हर वीडियो के एंड में बोलते हैं, जो आपने चैट बॉक्स में हमारे साथ बोलनी है? वो लाइन है, अपना टाइम अपन खुद लाएगा. We are in it to win it. We are in it to win it. Thank you very much. Take care, everyone. We wish you all the best. You can message us on Telegram, Instagram. We are reaching out to each one of you personally as well. We are here, right? Wrong diary मैंने बहुत बार सिखाया है. एक बार मेरा वीडियो देख सकते हो, 20th copy कैसे बनाते हैं, which is what is your wrong diary. It is on the DAMS Delhi channel. वो देख लो, अपने आप डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी. And otherwise, you can always send a DM to me as well. Okay? Take care, everyone. God bless you. Keep your spirits high. Everything is achievable. Just have that immense faith in your abilities. Okay? Take care. Bye-bye.